Right, just a minute. I don't know what happened here. I'm checking things. Wait a minute, all right? Because just stream ended and it's I wanted to restart again. ये नहीं समझ आ रहा कि स्ट्रीम एंड क्यों हुआ पर या तो ये यूट्यूब के साइड से इशू है या अदरवाइज समथिंग इज रॉन्ग. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरे को लग रहा है वापस वही सेम इशू है लास्ट टाइम जैसा. मैं खुद की चैट मेरे को लग रहा है डिफरेंट वे में देखनी पड़ेगी. एनीवे पता नहीं यार ये मेरे को सर्च करने दो व्हाई ओबीएस इज. लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है. मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रेम फ्रेम ड्रॉप हो गया था अभी एंड अभी फिर वापस. ठीक है कुछ तो है चेंज बट आई विल डू इट आफ्टर द लाइव स्ट्रीम. एनीवे तो आई होप कि अभी प्रॉपर्ली होगा वॉइस एंड ऑल. और लेट मी नो यार इन चैट अगर तुम लोग देख रहे हो एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू थ्रू द लाइव स्ट्रीम while maybe voice or anything like that. ठीक है so let me know in the chat. Anyway, okay, so right now what I'm looking for key first of all, either we look for buys when price drop a little bit or we look for sells from the top. ठीक है but at the moment we just got a new candle just open up. ठीक है I'm gonna wait, see. All right, all right, let's do it. So first of all अगर हमें भाई के लिए भी वेट करना पड़ेगा तो इधर तो आना है for sure. If we're looking for buys, so what I'm looking for is something like this. Either rejection some here, then we push up. Okay. Otherwise, we move down a little bit and then we see rejections here. Then we target this level and that's it. All right. These are the two scenarios that I see if you're looking for buys. And if you're looking for sells, I feel like it could be around this level. I don't know. यहाँ से टॉप से सेल लेके कोई फायदा नहीं है. ठीक है अगर तुम फॉर नो रीजन अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ठीक है यू नीड टू एटलीस्ट वॉच द चार्ट फॉर सम टाइम बिफोर यू टेक एनी ट्रेड्स. राइट नाउ अगर देखो मेरे को भी आइडिया है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ से भी सेल ले सकता हूँ स्कैल्प कर सकता हूँ बट नो पॉइंट ना यार. देयर इज नो पॉइंट. योर बायस दैट इज really important. For an example, if you come to the chart and you've decided that you will be only taking buys, then only take the buys, you know, because you know fundamentals are bullish. तुम्हें आइडिया है ट्रेंड बुलिश है तो फिर सेल क्यों लेना है तुम लोग को. अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही क्यों है. बिकॉज दैट विल ट्रिगर द ओवर ट्रेडिंग पार्ट यू नो.
ये अब हम लोग को लगता है कि hedging इज समथिंग, hedging बॉट के लिए सही है भाई, अगर तुम्हारे पास बॉट है दैट इज डूइंग द hedging देन वो सही है, क्योंकि वो कैलकुलेटिवली काम करेगा, उसके इमोशंस नहीं है, हमारे हैं। तो हम जब hedge करते हैं फिर वो अकाउंट उड़ता है बेसिकली, बस। ठीक है, तो hedge वेज नहीं करेंगे, वी जस्ट वांट अ सिंपल ट्रेड सेटअप, वी गोना वेट फॉर दैट एंड देन वी गोना टेक द ट्रेड। न्यू 1 आवर का भी ओपन है, तो ये न्यू 1 आवर जो कैंडल है ना, ये बेसिकली अगर लॉन्ग विक बनाता है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लेके, ऐसा कुछ, तो वी कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि सी 4 आवर ओपन हुआ एंड इट स्टार्टेड पुशिंग अप, ठीक है, वी स्टिल हैव 2 आवर लेफ्ट। सो अकॉर्डिंगली आई फील लाइक अगर ये ड्रॉप करता है या तो यहाँ तक ड्रॉप करता है, देन ग्रैब सम लिक्विडिटी एंड वी कैन सी अ पुश अप दैट विल गिव अस एटलीस्ट 50 to 60 pips, एंड आई गेस दैट विल बी मोर देन इनफ कि हम वो कर सकते हैं। क्या बोलते हो, व्हाट डू यू थिंक गाइस? ऑलराइट। हाँ, अकेला लाइव स्ट्रीम करने में ना बहुत टफ है यार, कोई, आई थिंक मैं आई एम प्लानिंग समथिंग, बट अगर वर्कआउट करता देन आई ओनली देन आई विल अपडेट यू गाइस अबाउट इट, वरना फिर कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, प्राइस ड्रॉप तो कर रहा है, सी, जो हम लोग ने प्लान किया था दैट इज वर्किंग, नाउ वी जस्ट नीड टू वेट, बी पेशेंट कि क्या ये 1 आवर की प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, क्या 4 आवर बैरिश फ्लिप करके थोड़ा सेलर्स को ट्रैप करके पुश करेगा अपसाइड, दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज ये अगर विक यहाँ तक बनाएगा तो 1 मिनट 5 मिनट पे रिजेक्शंस ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो ही जाएंगे, सी, ये जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, इट ऑलरेडी स्टार्टेड रिजेक्टिंग दिस लेवल, अगर मैं यहाँ से बाय लेंगे दैट विल बी अर्ली एंट्री, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी बाय लूंगा दैट मेरा एसएल बहुत बड़ा जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन नॉट एड दिस, आई कैन मार्क हियर, और अगर मैं यहाँ पे बाय लूंगा, ठीक है, देन मेरे को मेरा एसएल एग्जैक्टली प्रीवियस लो के नीचे रखना पड़ेगा, दैट इज 68 पिप्स, और ये इजीली है ना, कैंडल समझ लो 1-2 मिनट में खींच लेगा नीचे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है यार, देयर इज नो पॉइंट, ये खींच सकता है अभी। Since how long you are trading? I've been trading since 4 to 5 years now, right? You can verify that through my channel. मैंने जो भी है पूरा सब चैनल पे बताया। This is my 2025 was the first year जहाँ पे I made profits and I ended the year with profits. So now 2026, the only change I have made is that I want to do it live this time. ठीक है? I want to do it with people, with the community. That's the plan I have in this year. Because पहले I was learning and now I'm like at a level कि जहाँ पे I can you know do with other people, do with the community. So that's what I'm doing. And मजा आती है यार लाइव स्ट्रीम पे जब you guys come and ask the questions, you know तो मजा आती है. It's fun. 20 minutes. Even if we enter on the flip of this candle, तो भी हम easily 60-70 पिप्स के आसपास, 100 पिप्स तो इजीली टारगेट कर ही सकता है.
but at the same time, then SL will be below the wick. See, इसने already 30 मिनट के previous candle के low का break करके it's rejecting, okay. But what I wanted is the 1 hour low to be taken out, which is this level. The only reason I want this is because then we have 4 hour nearly coming to the previous high, and that could be a good push. अगर प्राइस ऊपर जाने वाला है तो ठीक है. बट या आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेल्स, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग एंड द टेक्निकल्स आर रियली स्ट्रांग. ठीक है, तो लुकिंग फॉर सेल्स इज अ सुसाइड, सुसाइड मिशन. मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, बट यार द ओनली रीजन आई हैव फीलिंग कि 30 मिनट इज नॉट रिजेक्टिंग, इट्स मैनिपुलेटिंग, इसलिए मैं नहीं एंटर कर रहा हूँ इधर. हाँ, अगर नहीं मैनिपुलेट ही कर रहा है तो फिर फ्लिप करेगा तब एंटर कर लेंगे. बिकॉज द गुड एंट्री पॉइंट इज अराउंड दिस लेवल, दिस, क्योंकि ये हमें बेसिकली एसएल इधर देगा. सो लेट्स अज्यूम दैट हाउ मच पिप्स एसएल, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसएल, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, देन आई नीड टू पुट एसएल बिलो दिस लेवल. तो ये स्ट्रॉन्ग एसएल नहीं है, एक ही रिजेक्शन है इधर, ठीक है. नाउ आई सी मल्टीपल रिजेक्शन बिलो दिस लेवल. अगर इस लेवल के नीचे मैं एसएल रखता हूँ तो आई एम श्योर कि प्राइस 1 to 2 times तो एटलीस्ट बाउंस करेगा इधर से, राइट. सी फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव दिस लेवल, राइट. Okay, price came here, rejected 1, 2, 3. This is a fourth rejection. Came back into this zone. It didn't break. It bounced back up. Tap here, bounce back up. Let's see. अगर हम कोई दूसरे लेवल की बात करते हैं, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल ये देख लो, 1, 2, 3, 4, कितने चार चार रिजेक्शन है. केम इनटू दिस लेवल अगेन, बाउंस बैक अप. मैं इतना बड़ा बाउंस बैक की भी बात नहीं कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा भी हो तो भी चलेगा. देखो यहाँ पे भी तुम देख लो, 1, 2, 3 रिजेक्शन आए, बाउंस किया, एटलीस्ट स्मॉल तो मोमेंटम देता ही है. दैट्स व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉर, कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे एंटर करते हैं, देन वी कैन एटलीस्ट बाउंस बैक अप, तो ट्रेड एटलीस्ट 30-40 पिप्स तो जाएगा ना. अगर यहाँ से ब्रेक करता है, देन वी कैन टारगेट बिगर मूव ऐसा. बट राइट नाउ दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बाई लेता हूँ तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट. तो वी गोना वेट. 15 मिनट क्लोज हो रहा है अभी 2 मिनट्स में. So let's see कि 2 मिनट्स में ये कैसे क्लोज होता है. Then 30 minute will be have last 15 minute left. So let's see. ठीक है. In the meantime, ask your questions. तब तक हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे. और क्या. बाकी another thing तो भाई सिल्वर इज गोइंग क्रेजी. सिल्वर के प्राइसेस देखे क्या किसी ने. नहीं, इंडिया में तो मतलब सिर्फ जिसके पास चांदी है, तुम तो कमा गए गुरु. मतलब जिसने चांदी रखा होगा ना, उनकी प्राइसेस होगी हायर. मतलब आई तो फील लाइक करंटली जो रेट है, आई थिंक इट स्टिल कैन टच अराउंड $100 मार्क. बट अगर इसने $100 का मार्क टच किया ना, लाइक लेट मी शो यू द हिस्ट्री. लेट मी शो यू द हिस्ट्री ऑफ सिल्वर. चलो हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं सिल्वर के ऊपर, ठीक है. लेट्स डू दिस. सो लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम. ओके, आई एम गोना शो यू प्रॉपर्ली द होल एनालिसिस. यार मेरे को वीकली पे जाना पड़ेगा, ये पूरा शो नहीं करेगा वरना. हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है. सी, सिंपल चीज, ओके. अंडरस्टैंड दिस. whenever silver have made a proper high, ठीक है, मार्क कर दे रहो कि कहाँ कहाँ हाई बना है, ठीक है. लेट मी डू दिस.
Okay, let me do this. So I purchased 5% funded account and I traded at morning gold and my stop loss hit for 50 pips. Then market move up side 200 pips. Now I'm waiting for a pullback. हाँ भाई वही बेस्ट ना पुलबैक के लिए वेट करेंगे ना ऑफ कोर्स सी बात है. सो लेट्स सी दिस. ओके, here's the thing. You see this is the like high. We had a nice drop. Okay, like ये $25 के आसपास $15 तक आया है. ठीक है. अगेन इसने पूरा यहाँ तक लिया है. ओके, देन यू सी अ ऑल टाइम हाई अगेन. ठीक है, ऑल टाइम हाई किया बट इसमें देखो लास्ट 2017 ये 2020 में पूरा इतना पुल बैक लिया है. Now what do you see after that? Simple चीज है. Okay, what do you see after that? Let's see. रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, वापस नीचे आया. कितना? $18 तक आया. फ्रॉम हाउ मच? $30. मतलब नियरली 50% वो नीचे आया. नियरली 50%. दैट इज नॉट समथिंग अ गुड थिंग कि एक प्राइस एक बार हाई बनाने के बाद 50% नीचे आता. ओके, नाउ दिस इज नॉट जस्ट हैपन वन टाइम बट मल्टीपल टाइम. यू नो, अगर तुम थ्रू आउट द हिस्ट्रीज देखोगे ना. ओके, आई गेस इसमें पूरा ऑल पास नहीं देख सकते ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट नो व्हाट हैपेनिंग बट एनीवे यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. क्योंकि अगर तुम सिर्फ क्या बोलते हैं हिस्ट्री देखोगे ना यू विल अंडरस्टैंड कि जब भी सिल्वर ने ऑल टाइम हाई किया है. ठीक है, इट हैव ऑलमोस्ट रिकवर्ड 50%. ठीक है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट व्हेन गोल्ड और सिल्वर विल हिट $100 मार्क? और क्योंकि आई फील लाइक कि 50 के बाद नेक्स्ट इज $100 मार्क ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, राइट? क्योंकि दिस विल वर्क एट सम पॉइंट. एंड जो करंट कंडीशंस है फंडामेंटल्स इकोनॉमी के वाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी इजी, प्रीटी इजी टू टच $100 मार्क. क्योंकि तुम प्राइस कैसे डिसाइड करते हो पता है? ये $78, $100, $50 या एक जैसे कि सिल्वर की एक वैल्यू एक टाइम पे $20 क्यों थी? ओके, इट्स सिंपल थिंग, सप्लाई एंड डिमांड. अगर तुम डिमांड देखो सिल्वर की एंड गोल्ड की, सो इट्स क्रेजी. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड की तो डिमांड यू नो व्हाई. क्योंकि बहुत टाइम से हिस्ट्री के थ्रू बहुत टाइम से लोगों ने यूज किया है. ओके, इट हैव यूज्ड एज एन करेंसी. ओके, सिल्वर भी यूज होता था बट इट वाज नॉट दैट much of a used. But now in all of the part, including your phone, your laptop, a lot of part of technology, you can say, जहाँ पे सिल्वर यूज किया जाता है. एंड एक वो भी एक मटेरियल है. देयर विल बी अ टाइम कि जब वो खत्म होगा, उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है. इफ दैट हैपेंस देन ऑफ कोर्स प्राइस कहाँ जाएगा? आसमानों का ऑफ कोर्स की बात है. वो बहुत ही ऊपर चला जाएगा. सो टाइगर FX trader भाई, definitely I am also looking for pullback. तो लेट्स सी. क्योंकि मैंने तो एशियन में ट्रेड ही नहीं लिया था. ठीक है, मेरे को आइडिया था कि ड्यू टू न्यूज इट कैन मैनिपुलेट रियली बैडली. ठीक है, पहले तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा और ये मैनिपुलेट कर सकता है. और गैप अप होना तो कंपलसरी था जो ट्रम्प ने किया उसकी वजह से. ओके, 15 में क्लोज हुआ है. सीधा सीधा नीचे आ रहा है. जैसे ही क्लोज हुआ उसके बाद 30 मिनट ऑल्सो हैव 10 मिनट लेफ्ट. We're gonna wait 10 minutes in the meantime and then let's see. Yeah, I'm not sure like कैमरा कहाँ रखूँ मैं? इधर I guess.
Sir, I hold silver from $58. भाई तो तुम जबरदस्त प्रॉफिट में होंगे, राइट? करंटली 76 पे है. इट शुड बी ग्रेट. अमेजिंग मैन. Share me your analysis on silver. Why, where you taken the trade, and send me your trading view chart or something if you can. You can share the link if you don't know, right? Okay. What do you see? Okay, अभी प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है इधर, ठीक है. सो 15 मिनट इज गोइंग बुलिश and we have 7 minutes left. 30 minute will be closing as well in 7 minutes. 1 hour will close, bullish flip कर सकता है. Let's go to 1 minute time frame and we're gonna see how price is reacting at the moment. And I see that it's holding this level. Okay, we can see that price is holding this level. And if we break above this level, most likely we can target something. Because we got enough rejections. I hope the manipulation now, that's it. अगर यहाँ से प्राइस ने ब्रेक दिया, ठीक है, एंड इट मैनिपुलेटेड, देन वी गोना बी अ लिक्विडिटी क्रैप बेसिकली. ओके, आई एम गोना एंटर विद अ रियली स्मॉल लॉट हियर. ओके, तो प्लीज भाई तुम भी अगर ले रहे हो ट्रेड मेरे साथ, एंटर विद अ स्मॉलर लॉट साइज, डोंट गो हाई. Okay, I'm gonna enter with a small. I'm already into the trade here. Okay, we got a trade close, but it closed below the structure, which is also not good thing. So be careful. Okay, I'm gonna put my SL below this VIX. Okay, putting the high here. Right now, our TP is really small. We can manage things accordingly. We have entered from here. SL is here, and our TP is right now at the high. But of course, that is not the target at the moment.
All right, we are moving up. Let's go. The only thing is that on a 15-minute closure, we have 5 minutes left. Now this 5 minute candle, it just open up and push up. Okay. Now this can move down, but at the same time, if it moves down, then we need to manage our risk accordingly. So I'm hoping that it could push really well to the upside, but let's see. Let's see. Like we have just of we need to wait a little bit here. What do you guys think? Is it pushing really well and all? क्या ये flip करेगा क्या वापस? Okay, I'm gonna move my TP. Okay, here. Our overall TP is not that, but let's see. I want to at least get around 100 pips. So this is our overall TP. Price moves strongly up to the side, upside like here. Pretty amazing entry. Let's go. Like we just entered with a small risk, but pretty amazing entry. We are up right now. How much? We did got a good entry. Now we just need to wait for price to. We are up around 25 pips. Ooh, this is what I don't like now because that now we have how much time left? We got 2 minutes left, and if this cannot flip bearish, then we need to manage things accordingly. Yeah, there we go. 15-minute closure in around 2 minutes as well. अब जब तक ये कैंडल है ना बुलिश है और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है till then we are good on this trade. But if we do break below the low, then possibly we can usually target this. But for now, I'm still with this trade as long as 15 minute is not breaking the previous candle low. Okay, 30 minute will be closed. So new 1 hour. Okay, 4 hour. How much time we have? 1 hour and 30 minutes. Comes yeah, we can definitely hit this level in that period of time. The only thing is that we need to see how prices do move. Give me a minute, guys. All right, so 20 seconds and price is already pushing. Okay, we got a closure of the 50 minute that is bearish, which I don't like. Now the 30 minute just open up. Okay, let's see. 30 minute. Where is it? Okay, interesting way of closing here. There's a still possibility that price can move as long as we don't break below this low. We are good. That is a good push.
for the candle that wanted to push down, I guess. That is a pretty good push back to the upside. Be careful, okay? Here now price have good amount of volume coming in, so be careful with this trade because the thing is the price just started pushing up immediately, and now if we take out the 30-minute candle high, that is an interesting point where you want to see how things will work. Okay, I'm gonna enter my another risk here as we are flipping bullish. But I won't suggest you guys to enter your risk full because I feel like this trade still can be manipulative. But I'm gonna close this one like once we break above this one. There's a still possibility that we can break the high at least. So that's why I entered one trade here. Yeah, it's rejecting now. Let's take a look at 5 minute. We have 2 minutes left. Let's see how this flows. Accordingly, we will manage our trade here. I got a call. I don't know who's this guy is. So just give me a minute. I'll be back in a minute, okay? All right. So we have 1 minute left. Now, if this 5 minute candle flows bullish, then most likely we can see a strong momentum at least to these levels where we can take our partials and let the rest of the trade run. All right. So I'm gonna update you once we are ready to take the partials. Let's wait a minute or so at least before we take the partials. All right. Okay, we got 10 seconds. Let's go, boys. Hit the like if you have taken the trade with me here. And once we taken the partials, I'm pretty sure that we count that as a win. We are up $200. But let's see. Waiting, I'm just waiting for price to take out this high. Once it's taken out, then I want to see how price is moving. Okay.
5 minute break the high first, and now it's flipping. Let's go to 1 minute time frame. You know what? I want to move my SL a little bit, but it's going to be a risky one, but like, don't have much of a choice though. At least I need to put it here because that is the last low I see. Now, if the 30-minute candle flip bearish, then that is not a good sign. Then we need to manage the trade accordingly because we don't want 30-minute to, break the high of a previous candle and then flip bearish. Same as for the 15-minute candle here that we are seeing. The only reason I'm still holding it was it simple as that. That new 5-minute candle open up, pushed up. Now, if it's just making a wick and can push and break the high, reclaim the high again, meaning that there is a good possibility that price can still continue moving up. All right. Yeah, 7 minutes for 50-minute candle closure. 7 minutes. All right. 5 minute just did what we were expecting. It did create the wick, and now it's flipping bearish and broke the high, reclaiming the highs again. Now let's see if it can just break this high and continue till 240. All right. If we can continue till that, then we take the partials there. One hour just broke the high. All right. I'm gonna let's see. Are we rejecting or are we still want to close the partial here at adding it? Just wait a minute. We have 1 minute left before the 5 minute candle closure. So should we wait a minute, 40 seconds only to close the partials? Because that is a risky one, okay? When we can also lose our partials here. Should we take the risk or should we not? Like it's 20 seconds left. As I'm seeing price is holding, it's trying to, but let's see, we get 10 seconds, last 10 seconds, guys. Nope, it's going bearish. There we go. I'm gonna close the upper position here. I feel like, wait a minute. What do you think, everyone? Like, is it going to break the high again? The last 5 minutes left है. The last 5 minutes for 50 मिनट. अगर इसको पूरा bearish करना है वापस 50 मिनट को, then this would be it. The manipulation, this was the manipulation then.
Let's go to 1 minute time frame. Yeah, this is a strong one. Let's see. Let's wait a minute or so because I have a possibility that price can still manage it here. अगर ये 5 मिनट का लो ब्रेक करके if it taps around this level and move up, that could be the possibility. That's why I'm holding here because I'm seeing that price is still in a good uptrend. We had a good push. This push pull back is totally normal through a smaller time frame, but with a bigger time frame, we can see that as a manipulation. Okay, 5 minute, 15 minute, and that time frames. But at the same time, there is a huge possibility that 15 minute can close, around these levels in 2 to 3 minutes. But if it flip bearish, then yeah, then we're gonna close partials there possibly because then there's a possibility that price is moving down. So actually on 28th November 2025, in office, all employees were talking about silver breakout and some other news and about silver, but I am not sure that time. Then I saw one client portfolio client is a CA. Okay, that's why you have taken that trade. Is that so? All right, price is pushing back down. We are going at break even again. Okay. What are the chances that this candle can reclaim the highs around this level? This or the next candle because we have 1 minute left only. Well, the London session is about to end, right? Yeah, the London session is about to end twice because okay, that is a problematic thing for us. Okay, we are about to see some. Strong momentum, I guess. Okay, in 10 seconds, we have 15-minute closure. All right. And 3, 2, 1, that is done. Closure has been done. So now let's see that we have closure of this. You know what? How much we are risking? Around 40 pips. How much I'll be risking here? So 200 is so I'm risking around
30, 40 pips and percentage wise, that is good, right? So it's still good technically if we, hit SL that. Ooh, I didn't see that coming. I mean, I was just checking some things and damn, prices reclaim the high again. But is it possible that this 15-minute candle can push back to the upside? Is it? All right. So, okay, here's the thing. Okay, 50-minute candle just open up and it's pushing to the upside. That doesn't mean that it cannot move down. Be careful. This is a really, problematic move. What will happen once this candle is done, respecting, it will just reject and, just 15-minute candle flip bearish and break all this and tap into this level. This is the move I have seen happening before after the rejection of this kind of a candle. But also at the same time, as we are in a strong uptrend, there's a huge possibility that won't happen. Then price can move up to this, reclaim the highs. But that's why we are looking at the smaller time frame, just in case if we see a strong bearish momentum coming in, we can manage our trade. All right. So yeah, I'm gonna hold it for now. Let's see. Okay, we've got 2 minutes left. Let's see what happens here. I'm gonna minimize this a little bit for now because now if we take partials, that would be yeah. Let's go. The only problem is ना कि sometimes trade, बहुत ही ज्यादा तुम्हें एग्जॉस्ट करता है विच इज अगर तुम ऐसी ट्रेड में फंसते हो ना एक बार भाई पूरी एक दिन की साइकोलॉजी तुम्हारी गई मतलब समझ लो उस टाइम पे ट्रेड उसके बाद ना ही करो ना दैट इज बेटर what I mean is like there are two types of trade setups. One that will give you TP in a seconds or in a minute. One that will exhaust you for 7 hours, and either it lets you hit the break even or it will give you TP or SL. So that is something I don't like. Now this in this trade, it's been already how much time? It's been already and when we entered half an hour, yeah, it's already 30 minutes. Like we've been into the trade. So that is, I guess, fine. But in next 30 to 1 minute, 1 hour, if we don't see it at least hitting the partials, then I'm gonna close it because I don't want to, you know, mess up things. And we have NY session, so we can come back in NY. Let's go यार चलो खत्म करो फटाफट 5 minute is breaking the high again. Let's see.
In the meantime, if you guys got any questions, fire in the chat. Don't fire, but like you can ask. या ये ना ये प्रॉब्लमेटिक है रिफाइनमेंट हाई ब्रेक करके ऊपर जा सकता है ठीक है इट कैन शूट अप बिकॉज ये पूरा सिर्फ विक है बट इट्स नॉट शूटिंग अप मतलब ये थोड़ा लेट्स टेक अ लुक एट द 1 मिनट टाइम फ्रेम हाँ यार ये आइदर ये फ्लिप करें यहाँ से पूरा पूरा शूट करें ठीक है अगर अगर इसने ये लेवल रिस्पेक्ट किया ना अब इस बार मतलब ये डेफिनेटली वो था हाँ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट शुड बी डूइंग दिस इट शुड बी डूइंग दिस ये एक बार हाई ब्रेक करता है हाउ मच पिप्स विल बी अप हम लोग का रिस्क 40 पिप्स का है ना ठीक है हम लोग पार्शल्स अराउंड 60-70 पिप्स पे हम लोग पार्शल्स ले लेंगे ठीक है हाफ क्लोज कर दो इज्जत से एंड गो होम विद द प्रॉफिट्स ठीक है वंस वी हिट दिस लेवल क्लोज योर पार्शल्स एंड लेट द ट्रेड रन ठीक है look at this look at this that's what we are talking about okay we break the high and we're still how much if I close the top position how much will it be we'll be up around $150 right you know what let's see I'm waiting for 10 seconds only. If this candle flows back below the range, then I'm going to close it. Yeah, I'm closing partials here. Okay, 50% is off the table. All right, guys, 50% is off the table now. Trade is possibly risk free. I'm going to move my SL at BE. All right, my SL is at BE. I would suggest you guys do the same thing. Your SL should be at BE. Partials is already taken. Don't risk anything on this trade now. I'm gonna target this levels. Oh, what the hell, man? What the hell? That's what you're gonna closed half here. London win. I'm gonna change the text color to white so you guys can see and I can, you know, half is closed. I'm gonna let the rest run. I'm gonna journal this trade. So yeah, let's go. We're gonna add this into a Discord. If you have not joined the Discord group, please do join the Discord group, guys. That will be on my website. You can see the below thing, the what we call a text bar, जहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, create your account at Exchange Floor to do that. And also the broker I'm using right now, that is Zillion. So if you want to check that out, link will be in the description. The reason I'm recommending this broker is because their payment system is pretty amazing. All right. So you can easily take out your money, you can easily deposit. So everything will be there. Check out, link will be in the description. And I think I'm done for this trade. I'm not gonna risk anything. The trade is risk free now. I'm gonna do this. So you guys understand that is a risk free trade. If we had a BE, then we had BE. If we don't, then we hit TP. Simple as that. All right. Let's see.
The only reason I closed a half year because I have seen that, whenever price did this, it can do similar thing here. But now this time, there's a possibility even if it come down, then I was pretty sure here that it could, break the low and continue moving down till here, which I don't like, and I don't want to risk it. So that's why I close partial here. So entry is important at the same time exits are important. So when you enter a trade, you should know when to exit. I knew that this was the first leg, this is the second leg. Now for the third leg, price can manipulate and then move up. And either it can, also move down because we are already at a high here. You can see that we are already at a high. That yes, there is a clean range here, but I don't want to risk it. Price can manipulate here, right? We have London session, we have New York session, so NYSC, we have plenty of session to trade again. So we already take out some profits, $100 or so. Why not just call it a session and come back in a new one where you can get better profits? Okay, in around 2 minutes, we have 1 hour closure. All right. In around 2 minutes, we have 1 hour closure. So let's see how price react here. We will wait for 2 minutes before ending the stream. All right. All right. See, that's what I'm seeing. That price can do something like this, and which we don't like. So better close something than nothing. We still have around 26 seconds and 1 minute. Then that price can, manipulate a rule strongly. You know why? Take a look at the 15-minute time frame. What do you see? Now, there's two ways this price can close. Either it will go totally bearish, which I showed you in the start before, I was seeing that. Either it can just come back here, close bullish strongly, and the next candle can push up. So that is the only two ways I can see it. Either it will be strong bearish or it will be strong bullish. So this one candle will be the decision maker candle that either you should hold a trade or it will be cutting out us at break even. जैसे ही साला सभी सभी लोग लेफ्ट किए कर दिया ना, है ना? जैसे ही ट्रेड ले लिया सभी ने लेफ्ट किया ना भाई. बड़े हरामी हो बेटा, बड़े हरामी हो. Okay, how much? Last 10 seconds. Hit that like. Hit that like. Guys, hit that like if you have get an sniper exit, sniper entry. Okay. Now this is your last candle which can give you again a reclaim of this high. तो अगर आपने इधर partial close नहीं किया तो there's a possibility we can reclaim the high again around 440 or so. मैंने बोला था ना 440 मार्क टच करना चाहिए तो already it touched once. So I'm not expecting it will go up again, but there is a possibility. ठीक है तो देख लो. If you feel like it, you can hold the trade, not risking much. 50% है. मेरा तो 50% है तो मैं तो थोड़ा लो के नीचे रख सकता हूँ ऐसा. I'm giving just a $50 room. तो देख लो तुम लोग को देना है तो दो, नहीं देना है तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा दो भाई.
एक बार टेबल से हटा दिया ना, पैसा नहीं डालना चाहिए वापस। सर ट्रेड मिस हो गया। भाई अगर ट्रेड ट्रेड मिस हो गया तो मैं टाइम को रिवाइंड तो नहीं कर सकता ना वापस। जो जो था वो ये था। एंड इट्स लाइक जो भी था, मतलब दिस वाज द ट्रेड आई हैव टेकन। लाइक इसके बाद तो अभी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा डेफिनेटली। विल सी न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में भी हम लोग लाइव जाएंगे, न्यूयॉर्क या तो एनवाईएससी में। तो लेट्स सी। तब तक आई डोंट नो यार, अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ ट्रेड। बिकॉज ये जो 15 मिनट और 30 मिनट कैंडल है ना, ये आपको रुला देंगे। It's stepping into the zone here, but like I don't feel like it will hold it here. It will just take it out. -$50 will be there। हम लोग ब्रेक इवन तो हिट हो गया है, ठीक है गाइस। ब्रेक इवन हिट हो चुका है। तो जो जिसने ब्रेक इवन किया था ट्रेड, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। मेरा ट्रेड इसलिए रनिंग है बिकॉज मेरा एसएल लाइक मैंने जस्ट लो के नीचे रखा था, जस्ट इन केस के प्राइस मैनिपुलेट करके